Hi guys, welcome back to another fresh episode of your favorite show about gadgets all around you, because show hai Gadgets 360 with Technical Guruji, wherein my name is Gaurav aka Technical Guruji, and aaj is show mein, just like every week, I've got some amazing stuff for you from the field of gadgets, because I know you love them, you all use them and you want to know more about them. तो आज एपिसोड में बहुत सारे गैजेट्स हैं मेरे पास में, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Guys, as we start, सबसे पहले as our ritual ना हम बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है in the field of gadgets in this segment, which is news of the week. सोनी लाया है दो एक्साइटिंग एडिशंस अपने कॉम्पैक्ट फुल फ्रेम लाइन A7C में, दी A7C-R एंड A7C2। ये दोनों कैमरास हार्नस करते हैं पावरफुल बायोन्स XR चिप को टू मैसिवली ओवरहॉल फोटो एंड वीडियो परफॉर्मेंस। नेक्स्ट अप इज द Realme GT5। ये हैंडसेट पावर किया गया है एक Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट से एंड इट इज इक्विप्ड विद अप टू 24 GB ऑफ रैम एंड 1 TB ऑफ स्टोरेज। आफ्टर टीजिंग इट्स एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले कॉम्पिटिटर, सैमसंग ने रिलीज किया है Viewfinity S9 5K मॉनिटर। ये एक 5K पैनल है, 99% DCI-P3 कलर कवरेज है, एक बिल्ट इन कलर कैलिब्रेशन इंजन है, एक 4K वेबकैम है एंड सो मच मोर। IFA Berlin has kicked off for the year 2023, 1st of September से। ऑलमोस्ट 100 साल से IFA has been at the forefront of innovations। IFA प्रेजेंट करता है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड लेटेस्ट इनोवेशंस, वो भी वेरियस टेक ब्रांड से फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। So guys, for the top story this week, I have an amazing gadget for you. एक बहुत ही interesting gadget है, लेकिन fun fact, it's got 4 set of wheels. This is the all new Audi Q8 E-Tron. I mean, EVs, because उसमें इतना सारा tech होता है अंदर, I clearly take them, in the segment of gadgets. और ये gadget चलता फिरता gadget है, packed with performance, packed with features, the biggest possible EV from Audi. The Q8 E-Tron recently launched in India. I mean, केवल कुछ दिन ही हुए, एकदम नया brand new model है. Let's go for a drive and explore the features of this all new Audi Q8 E-Tron. Guys, there's a different feeling altogether the moment you drive an EV. I mean, it's completely unmatched, I must tell you. And I mean, it's simply the case with this Audi E-Tron as well. And EV की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, मतलब if you have the memories of EVs wherein the cars or the two-wheelers, they were slow, they had limited range, इतनी performance आपको नहीं मिलती थी. That's not the case anymore with these kind of high-end electric vehicles. And यहाँ पे भी the way this car behaves, the way you drive this 2.5-ton SUV powered by batteries, powered by this dual motor system, I think it's really phenomenal. यहाँ पे अगर आपको बताता हूँ मैं इस गाड़ी की स्पेक्स क्या है, तो we have total 114 kWh का बैटरी पैक एंड 2 मोटर्स हैं इसमें। Combined, what we get is a 408 horsepower system with 664 Nm of torque. I mean, plenty of power, plenty of torque, and the way it gets delivered, that's where the beauty is. मतलब बहुत एक अच्छा आपको experience मिलता है। At the same time, if I talk about other stuff, जहाँ पे बैटरी रेंज की हम बात करते हैं, तो Audi claims that this car is gonna give you a range of 580 kilometers. Realistically speaking, the way you're gonna drive it, yeah, the way the climate is, or the way you're gonna use the air conditioning and everything, the range will drop. Realistically, जो मुझे लगता है वो करीब 400 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज मिलनी चाहिए इस गाड़ी में, जो कि I think it's good for the local commute. अगर आप सिटी से बाहर कभी ट्रैवल करते हैं तो you'd want to take advantage of DC fast charging रास्ते में कहीं पे, जहाँ पे it supports up to 170 watts DC fast charging, और from 10 to 80%, if you want to charge your top of your battery, it takes 31 minutes. तो ये एक काफ़ी अच्छा kind of experience हो जाता है, जहाँ पे if you just take a small halt, or if you're just taking a small break, तो you can recharge your car while you are recharging yourself.
I mean, at the same time, if you want to, like take the advantage of charging at home overnight, let's say. So this car supports the standard 22 kilowatt AC charging and takes around 6 hours. आप 6 घंटे में इसकी पूरी बैटरी को, from zero to full, you can recharge this battery. Otherwise, फिर 170 kilowatt का DC charging तो है ही. If you want to take advantage of a fast charger, the air suspension is definitely very good. We have multiple drive modes. And the way the car behaves, very agile, very kind of grippy to the road, and the way मतलब ऐसा लगता है कि you are in control of the way the car behaves. तो ये एक बहुत ही अच्छा है the driving experience, the complete driving dynamics. Okay, so 3, 2, 1. Did it in just 5.6 seconds. That's Audi Q8 E-Tron for you, an SUV that gets you from 0 to 100 kilometers per hour in a straight flat 5.6 seconds. And guys, this is clearly the sign that EVs are getting better and better and better. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Q8 E-Tron की, so I must tell you this is essentially a facelift of the already existing Audi E-Tron. And अभी दो अलग-अलग बॉडी स्टाइल्स हैं. So what you can get is standard SUV form factor, या फिर अगर आपको चाहिए एक एक स्पोर्ट्सबैक कूप, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं. Audi should definitely improve on their infotainment system. This is not a complaint per se. I mean, the system works completely fine. We got amazing 2 touchscreen system combined with the kind of this cluster with full information in terms of you can customize it, and I mean everything is fine. But the thing is, we have seen this for a long time now, so it feels dated. So guys, there you have it, the all new Audi Q8 E-Tron. And I mean, अभी तक आपको सब कुछ पता है इस कार के बारे में. I told you almost everything except the price, कि आखिर ये बड़ी सी एक इलेक्ट्रिक SUV from Audi कितने की है. And the price, the starting price for the Q8 E-Tron in India is 1 crore 14 lakh rupees, and it goes all the way up to 1 crore 26 lakh rupees depending on the variants that you might get. Complete performance SUV with plenty of power. I mean, the way the car looks, the way the car behaves. बटन दबाइए, आपका चार्जिंग पोर्ट खुल जाता है. On the other side, we have another one for faster DC charging, and everything in one place in this, the Q8 E-Tron. Even the Audi logo is in 2 dimensions. Now guys, I know for sure that apart from gadgets, जो मैं आपको of course दिखाता हूँ, अभी just हमने इतनी बड़ी कार देखी है, you all love this section as well, जहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ एक interesting सी tech tip जो आप खुद भी यूज करते हैं of course, and you share it to your friends as well. And इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ something about smartphones. See, you all have one, I'm sure. But इसके अलावा just to track, let's say, the steps in something, mostly what we do is we buy a smartwatch or a smart band or something just to keep track of the steps. क्या आपको पता है most cases में आपका जो मोबाइल फोन है वो आपके लिए steps को track कर सकता है. You just need to kind of dig into options. OnePlus के अंदर ये option है. Many Samsung phone they have this option जहाँ पे just with your smartphone आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं about your steps. Now why do I say basic? The simple reason is because the phone is not with you all the time. लेकिन अगर आपकी जेब में फोन है and you are walking, the phones are fairly smart to give you that brief idea about कि आपने दिन भर में कितने steps चले हैं. So before you just jump and buy any smartwatch or fitness tracker, to begin with, or maybe you prefer to wear the analog watch, आप अपने फोन से steps का एक basic idea लगा सकते हैं. Guys, now it's time, for something really exciting. I just received an email from Apple because we got the invite for the upcoming Apple event happening in Cupertino, California on 12th of September. जहाँ पे, as we all know, the new iPhones are coming in. iPhone 15 series in general, वो आने वाली है. इसके अलावा we might see some other Apple products as well, particularly the Apple Watch, the new Watch Ultra, maybe an iPad. मतलब बहुत कुछ होने वाला है. And I'll be there on ground, तो मैं आपको सीधा वहीं से बताने वाला हूँ, straight from Apple headquarters, कि Apple के जो नए products हैं वो कैसे हैं, या फिर how's the first look. तो वो तो आपको सबसे पहले मिलेगा ही. But
अभी इन दिस सेक्शन हम डिकोड करने वाले हैं दैट इनवाइट जो हमको मिला है फ्रॉम एप्पल, द कीवर्ड बीइंग वंडरलस्ट। अब हम सबको पता है व्हाट इज वंडरलस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम पे हम सबने चारों तरफ खुद भी फैलाया है और जो लोग पोस्ट करते हैं वो भी देखा है, बट इट्स नॉट वंडरलस्ट, एप्पल बोलता है वंडरलस्ट। सो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट वी माइट गेट सम न्यू समथिंग फ्रेश कमिंग इन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एप्पल। At the same time, the moment you look at this Apple logo जो Apple ने इस invite में use किया है, looks like कि Thanos just snapped and you know this thing is diluting, but ऐसा नहीं है। The secret is each year, whenever we get an invite from Apple, we always try to decode कि आखिर इस invite का मतलब क्या है। And this time, what I can clearly figure out is that this invite shows us the shades of the colors of the new iPhones, especially the Pro lineup, and ये जो आपको पूरा एक sand जैसा जो एक पूरा ये element दिख रहा है, as this is not sand, this is how titanium in its powder form looks like. So just kind of making sure कि जो Pro models होंगे इस बार, especially the iPhone 15 Pro and the Pro Max, there are rumors it might be called iPhone 15 Ultra, not the Pro Max, but then again जो Pro models होंगे वहाँ पे we might see, and I would say we'll surely see a titanium build. And for a reference, what I have with me is this being the dummy of the new iPhone 15. This what I'm holding right now is a dummy of iPhone 15 Pro, जहाँ पे you can see कि the frame would be of titanium, थोड़े से ऐसे rounded edges होंगे for a good in-hand feel. Of course, we'll have the USB-C port, जो mute switch है उसकी जगह पे एक नया action button आने वाला है. Inside we'll have, of course, the Apple's latest A17 Bionic chip. या अगर हम बात करते हैं for the Pro Max, in terms of cameras, we might see a periscope arrangement. So ये सारे मेरे predictions हैं. बहुत सारा एक्साइटमेंट है एंड आई एम श्योर कि जब मैं फर्स्ट लुक लेके आता हूँ ना, व्हेनेवर राइट आफ्टर दैट लॉन्च, यू ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज यू ऑल वुड वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन दैट एप्पल हेडक्वार्टर जहाँ पे नए वाले आईफोन्स बन रहे हैं। वैसे इस शो में भी बहुत कुछ नया बनने वाला है, कमिंग टू यू राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, जहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग गैजेट्स के बारे में। Hello guys, welcome back after the break to your favorite show about gadgets, because यही वो शो है जहाँ पे हम बात करते हैं गैजेट्स के बारे में एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ में, because you are watching Gadgets 360 with Technical Guruji। एंड यहाँ पे ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाई एक बड़ी सी कार, an EV from Audi, the Audi E-Tron Q8। बट अभी ब्रेक के बाद हमने आईफोन्स की बात वैसे कर ली है पहले, बट अभी एक बार वापस से हम फोन्स की बात करते हैं, बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट द फोन कैमराज। Now, did you know the mobile phone cameras that we all have right now, जो आप सभी के जेब में मोबाइल फोन है, उसमें I'm sure there are multiple cameras, minimum 2 to begin with, and then the number can go as high as 5 or 6 cameras in just one phone. But everything about this phone camera that we enjoy right now, कि छोटा सा compact size होता है, low light imaging बहुत अच्छी हो गई है, we get some high resolution images. Now these technologies, they have been derived from NASA's imaging technologies, जो NASA ने एक टाइम पे use किया था for space exploration. So it's a fact that today, as we all use these devices pretty commonly in consumer electronics, फिर चाहे हम बात करते हैं एक basic internet service के बारे में या फिर एक मोबाइल फोन के बारे में, sometimes the roots are maybe in the field of space exploration or in terms of military, and वहाँ से चीज़ें बनती हैं, develop की जाती हैं, and at the end we as consumers get to enjoy these technologies. Now guys, I'm sure you all know why I'm so happy, because अभी ये एपिसोड का जो एंड वाला सेक्शन होता है ना, this is one of my personal favorites, because this is the section जहाँ पे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ, in this section Ask TG. Let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या सवाल हैं। Hi TG, I have been thinking of upgrading my phone and I finally think it's time. I am thinking of upgrading to the iPhone 15. How much do you think it would be worth when it will be launched?
Okay, the price for the iPhone 15 lineup. I mean, it's kind of the talk of the town because everyone wants to know. सबको ये जानना है कि आखिर iPhone कितने का होगा. लॉन्च तो हमको पता चल गया है कि 12 तारीख को होने वाला है, बट प्राइस क्या है? So guys, let me tell you what I believe, as per my own experiences, that the 15 and the 15 Plus would have a similar price to how it was last year. iPhone 14 या 14 Plus की तरह ही आपको इस बार प्राइस मिलेगी. But the Pro lineup of iPhone 15 this year, उसमें शायद आपको एक 10,000 का एक इंक्रीमेंट मिल सकता है प्राइसिंग में. And उसके बदले में the base storage variant for these Pro iPhones this time would be of 256 GB. So do your math. See, last time Apple की pricing क्या थी for the 14, 14 Plus, 14 Pro and the Pro Max. This year for the 15 and 15 Plus, kind of similar to as last year. But for the Pro models, एक 10,000 का शायद एक jump मिल सकता है. As the name suggests, near field communication. So it basically is for communication with quite nearby devices. तो अगर हम बात करते हैं पेमेंट्स की, जहाँ पे आप अगर टैप टू पे को यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन से या अपनी वॉच से, तो वहाँ पे NFC काम में आता है. At the same time, if you talk about pairing, it with a Bluetooth headphone or a speaker, जहाँ पे अगर आपका Bluetooth headphone या speaker NFC को support करता है, तो it's just a tap away, for you to pair your phone with that particular device. इसी के साथ साथ you can have kind of custom NFC cards. मार्केट में मिलते हैं, they are very cheap. आप उनको लेने के बाद you can write a certain way. And for example, the moment you enter your house, you tap your phone to that NFC tag. It's like a small sticker. And उसके बाद में आपके phone में you can change the ringtone or change the profile or get connected to a Wi-Fi network, or you can turn off your location. Like you can have a set of commands that you can write, जो आप उस NFC tag में code कर सकते हो with very easy steps. तो आप at times you can use NFC for shortcuts as well, for sharing the contact information. आपका business card जो है वो NFC enabled हो सकता है, so that the other person just needs to tap and instantly your information is right on his phone. There are multiple such uses depending on your lifestyle. You can pick one. So guys, with this we come to an end of this week's Gadgets 360 with Technical Guruji. I mean, with each episode I'm always excited because हर बार कुछ ना कुछ नया होता है आपके लिए. And this time of course it was the car and the upcoming iPhone 15 series, जहाँ पे हमने कुछ predictions तो कर दी हैं, but now it's time for you to wait for the next week's episode because अगले हफ्ते कुछ और नया और interesting होने वाला है. And by the way, if you're still figuring out that what's the way to ask questions, let me tell you, it's a simple email address, tg@ndtv.com. Please go shoot all your emails, your questions, queries, feedback, anything that you have in mind, and I'm going to read them all and see you next week. Same location, same time, everything in the field of gadgets coming your way. Abhi ke liye itna hi. See you next time. Have a good day.